Very good evening, friends. Today we again have the privilege of having with us CA Rakesh Tayalji, who is an insolvency professional as well. Yesterday we had a marathon session on case laws, and he very beautifully pointed out the various points on the basis of which we can remember the case laws. So today is the continuation to that, and I hope some of you must have gone through the case laws through the video lectures which are posted on my YouTube channel and the PPT which is available on my website carkgupta.com. So with this, it is over to Rakesh Tayalji. Rakeshji, please. Thank you, Gupta ji, and hope everyone has gone through the PPT which I have shared and read the case laws which we have covered last yesterday. And also, I expect that the remaining cases also you have gone through, so that we can quickly wrap up our session today, not like marathon tomorrow. We should more focus on the practice of the questions, and that will be more interactive session like we have yesterday. So I'm sharing the screen. Can everyone see the screen? Yes. Yeah. So I will start with this others case law summary. Means these are the case laws, unique case laws where other issues have been covered. So till now we have covered that case law by topics like home buyers. There are 4 cases. There are 4 cases relating to the financial creditors, government dues. But these are the cases where unique things have been discussed. So wherever there is a spectrum issue is come, so it is in the unified telecom. They have discussed the spectrum issue in the unified telecom. The SR Steel, COC of SR Steel, they have discussed the role of resolution applicant. So in a COC of SR Steel, as I told yesterday also, wherever role of resolution applicant, NCLT, NCLAT, so different stakeholders in the IBC code, the role of those has been discussed in the this case, and this case is related to Supreme Court also. Then IRA Infra is the NCLT case. They have mentioned that section 8 notice is mandatory, and section 2, if any notice given under 271 is not valid. So for filing the IBC, you must have to give the demand notice and in section 8 itself. Then Astonfield Solar, Exim Bank versus Astonfield Solar. In this case, they have decided that shareholder can exercise the voting right under section 10(3)(c), even if deed of pledge mentioned that on default shareholders shall lose the right. So in this case, what happened? There is a deed of pledge. Give me a minute. There's some background noise coming. So, am I audible now? Yes, sir, audible. Yeah, thank you. सर मैं 1 मिनट बोलना चाहती हूँ. मैंने अभी एक क्रैक निकाला है इरा इंफ्रा का. Yes, please. सेक्शन 8 नोटिस इज मैंडेटरी. तो सेक्शन 8 का हो गया 8 नंबर. और इरा इंफ्रा को अगर ऐड ऑन करेंगे तो दे आर आल्सो 8 डिजिट्स. तो कभी भी सेक्शन 8 दिखे तो इरा इंफ्रा इज 8. राइट गुड. बस ये क्रैक सबके लिए यूजफुल हो जाएगा. बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. थैंक यू. Yes, Gurdeep. This is very good, Gurdeep ji. So we need this interactions, and these are the things which we can use in the future sessions also, these tips, so that once you give these interaction or interactive sessions or interactive things, then this will be beneficial for everyone. क्योंकि ये जो tips हैं, no one will forget in the exam at least. Okay, IRA Infra section 8. ये गुरदीप जी ने बताया था, like this. Okay, thank you. So Gammon India, in this application under section 9 cannot be filed against a company who is a partner in the partnership firm, because in the CIRP cannot be filed. So whenever there will be partnership or a personal injury will come, it can be go there, but it is not under the CIRP. In the Cushman and Wakefield, this is a registered value or appointment case, that no company, if a subsidiary, JV or associate of another company, that cannot be appointed as the registered valuer. And in Jet Airways, they have appointed
they have admitted that CIRP can be admitted even if Netherlands court has passed the order of insolvency. So Netherlands order is nullified. Have we covered this interplay with other acts yesterday or not? No, I think so. So we can quickly go through this also. That interplay with other acts means these are the 4 judgments, 2 of the Supreme Court, 1 is the High Court, and 1 of the NCLAT. Wherein Supreme Court Innovative Industries, they mentioned that MRU SPA that cannot be interfered with the IBC 16, and under MRU Maharashtra relief undertaking, state government can take over the management of undertaking and impose moratorium in the same manner as they are contained in the code, but it is represented by IBC 16. Santosh Vasant Rao, initiation of CIRP is vacated in view of pendency of winding up petition before Honorable High Court. So this has been decided in the Santosh Vasant Rao. And Pioneer Urban Land, they have decided that code will prevail wherever there is a conflict in the RERA. And in Jotun India, again, the company court over CIRP proceeding, no power inject, no carving out of existing winding up proceedings. So this issue have been discussed under the interplay with the acts. So this is the applicability of law. So these all cases covered the where issues relating to the applicability of law has been covered. So Pioneer Urban Land. Can anyone tell what is the other issue in the Pioneer Urban Land? Extension of time limit of 270 days. 270 days. Yeah. रेजोल्यूशन प्लान रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट में जो वेस्ट टाइम हो गया था उसको एक्सटेंशन देने के लिए Pioneer Urban Land में this is only discussed. It is the home buyer case, the first one, which you have discussed yesterday. There are 2 issues discussed. That again, because this is related to home buyer also, and this is related to applicability of law also. So I have covered the both places. So they have discussed there. वो दूसरा केस था सर, कल भी हम कंफ्यूज हो रहे थे, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का एक अलग केस था कोई, चित्रा शर्मा में उन्होंने एक्सटेंशन दिया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल 142 इन्वोक किया था. पायोनियर के अंदर दे हैव क्लैरिफाई दैट amendment explanation which were introduced to section 58F are not unconstitutional and they are not enlarging the scope of the original section. It is only a clarification to the original section. सर इसमें वायलेशन ऑफ 14 का भी आया था, 14 एंड 19 1F कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट, आर्टिकल 40 राइट ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज़ इन्होंने बिल्डर्स ने चैलेंज किया था एक्सप्लेनेशन आने के बाद, क्योंकि सारे बिल्डर्स ने चैलेंज कर दिया था कि ये जो है आपका आईबीसी के अंदर ये होम बायर्स को आप कैसे लेके आ रहे हैं, जबकि ओरिजिनल अगर पढ़ा जाए तो आईबीसी के अंदर होम बायर वाज फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है ही, बट मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इट्स अ सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर. एंड एक टाइम आएगा सर जब आई विल टेक दिस मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट कि अगर आप सेक्शन 3 विद इन 21 और सेक्शन 320 पढ़े तो ये सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाता है. तो मेरा राइट है, मेरे फ्लैट के ऊपर मेरा राइट है सर, उसको बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता. बैंक इज दैट्स राइट, क्योंकि बैंक इज फाइनेंसिंग इन एडवांस. Yes. नहीं, मैंने अपने फ्लैट को खुद फाइनेंस किया ना सर. एक मेरा क्लेम हो गया और एक मेरी सिक्योरिटी हो गई. जब आप भरते हैं, जब अपना वो भर रहे हैं, क्लेम भर रहे हैं, वहां आप सिक्योरिटी दिखा रहे हैं, और जब आईआरपी भी भरता है वो दिखाता है किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है क्रेडिटर की, तब वो उसको होम बायर के फ्लैट को दिखा देता है. जैसे आप भी दिखाएंगे कभी होम बायर को तो उसके अंदर सिक्योरिटी का कॉलम जरूरी है फिल करना, वहां पे होम बायर को दिखा दिया जाता है. तो बेसिकली होम बायर्स आर सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर. वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाइनर में अंदर बोल दिया, चित्रा में बोल दिया, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू. तो कभी ना कभी इसका रिव्यू जरूर आएगा. चलिए सुप्रीम कोर्ट का केस करेंगे, उसके बाद जब आएगा तो नेक्स्ट लेवल्स में एक केस बढ़ जाएगा. और बड़ा टाइम लगेगा सर, अभी बड़ा टाइम लगेगा. अभी तो हम फंसे पड़े हैं एनसीएलटी के अंदर ही फंसे पड़े अभी तो. हमारा दोबारा रिव्यू हो गया ना असल के अंदर. ओके, हमारा दोबारा दूसरी बार ये 142 को इन्वोक किया है सुप्रीम कोर्ट ने. ओह ग्रेट.
पहले चित्रा में इन्वोक किया सर इसको 142 राइट फिर हाँ, चित्रा एनबीसीसी में में फिर दोबारा राइट। इन्वोक किया, वो अगले साल अगले सिलेबस में आ जाएगा आपके। थैंक यू तजिंदर जी। तो सर आपका डाउट क्लियर हुआ कि 142 जो इन्वोक हुआ था वो पायनियर में नहीं हुआ था, दैट इज इन द चित्रा शर्मा ओनली। चित्रा शर्मा, ठीक है महेंद्र जी। हाँ जी। ये कोई इसमें भी था ना जी, एडोनिक क्या ये वर्सेस एसबीआई? आज तक 142 कभी भी इन्वोक नहीं हुआ सर। हमारे सामने वो फाली नरीमन खड़ा हो गया था सर आके। ये क्या जी, एडोनिक के वर्सेस एसबीआई जी, आधुनिक मेटल्स वर्सेस एसबीआई, एक्सटेंशन ऑफ 270 days बियॉन्ड 270 days फॉर 20 days। नहीं, आधुनिक मेटलिक्स में बेसिकली कल भी आप कंफ्यूज हो रहे थे महेंद्र जी। आधुनिक मेटल्स में एक ही चीज डिस्कस हुई थी, जो एक्सपेंस बिटवीन द सीआईआरपी एंड लिक्विडेशन, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कॉस्ट। ये आपके नोट्स में यस्टरडे आल्सो यू हैव चेक्ड इफ यू रिमेंबर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आधुनिक मेटल यस कल भी आप इसी चीज पे कंफ्यूज हो रहे थे। इस पे क्लियरली ये मेंशन है जी, इसमें मेरे सामने केस पड़ा है जी। IRP should file application for exclusion of 20 days from the statutory period of 270 days, which was being wasted in considering eligibility criteria of। जो इशू इसके अंदर मेरे सामने है सर, मेरे पास आशीष मखीजा की बुक है, वो केस में खोल के हम डिस्कस कर लेंगे अलग से। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये मेरे भी सामने है जी। चलो मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा, मैं लिख लेता हूँ, आपसे ऑफलाइन में आफ्टर द क्लास इमीडिएटली डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ठीक है। And we will put the clarification if any on the group also for the benefit of everyone. मैं भी इसका फोटो लेके इसमें डाल दूंगा जी। हाँ that will be good. So दूसरा केस था श्री मेटेलिक्स का, ये हाई कोर्ट का केस है। इसके अंदर ये बोला सेक्शन 7 जो है अल्ट्रा वायरस नहीं है। सेक्शन 7 को उन्होंने बोला कि बिकॉज द डिफॉल्ट इज आल्सो विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ऑपरेशनल क्रेडिटर केस में डिफॉल्ट जो है जरूरी नहीं है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास हो। ये सर ये जो नोटिस आने शुरू हो गए एनसीएलटी के, बेसिकली फाइनेंशियल क्राइटर्स के केस के अंदर एनसीएलटी ने नोटिस शुरू कर दिए हैं। वो अब विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर, वो केस को अंडर सेक्शन 7 आगे नहीं लेके जा रहे। तो ये क्या इसी केस की वजह से हुआ है या वैसे ही हो गया नेचुरल जस्टिस की वजह से? अब जितने भी 7 में आ रहे हैं उसके अंदर सब में नोटिस इशू हो रहा है सर कॉर्पोरेट डेटर को कि आपको कोई डिस्प्यूट तो नहीं है कोई, ये ऑन अकाउंट ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो सेक्शन 424 का या इसकी वजह से हुआ है, इस केस की वजह से हुआ है? इस बेसिकली उन्होंने जरूरी नहीं है कि आप जो है उसमें नोटिस दें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर आईबीसी कोड, देयर इज नो नेसेसिटी टू गिव द नोटिस, एंड एज पर द हाई कोर्ट आल्सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन एज द सेक्शन दिस नोटिस टू बी गिवन, but the reasons to be recorded in the writing, order should be speaking order. तो इसके अंदर श्री मिटालिक के अंदर उन्होंने बेसिकली बोला ना कि ऐसा है कि ये अल्ट्रा वायरस हो गया केस, क्योंकि सेक्शन 7 इज अच्छा नॉट अल्ट्रा वायरस, नॉट अल्ट्रा वायरस नहीं हुआ, अल्ट्रा वायरस नहीं हुआ, राइट। Then in SR Steel Limited they have defined the judicial review of NCLT and NCLAT कि COC of SR Steel में that you have the limited judicial review, you cannot complete judicial review and commercial wisdom should not be questioned. Basically concept of clean slate हो गया सर ये वाला। Yes, right. And then in Shivam Water they have discussed that High Court to address the relief to action by the respondent or any order passed by the NCLT. High Court not to enter into debate. So Shivam Waters में basically they have define the limit of the high court, because high court should not enter ki IBC is valid or not. So in the Supreme Court case BK educational ने रोका था, हाई कोर्ट को रोका था इस केस में कि भैया आप ज्यादा मत डिस्कशन वगैरह करो, आपके वैसे भी परव्यू में नहीं है। राइट सेम थिंग कि शिवम वाटरा केस का वो, यू आर राइट सर। BK educational section 238A which has been inserted on 6th June is from the inception of the law, so it is not prospective, it is retrospective implemented. They have given this clarification in BK educational. Om Bosco Rail, in this case they have defined ki the 1 crore limit which has been introduced on 25th March for the application is prospective effect
and anything which is undergoing, the appeals which are pending or admission which are pending before the NCLT, for those 1 lakh limit will apply. In case of K. Shashidhar, they have discussed that 34, the 66% voting right is also effective from the prospective date. And in Chitra Sharma case, again the case of the home buyer, that Article 142 has been invoked, and SC has the power to revive the code by another 180 days. So these are the cases where Supreme Court mainly decided the applicability of law. Only in one case, High Court come into the picture, the Shri Metallics. All the cases of applicability of law are decided by the Supreme Court. In Swiss ribbon case, so wherever Swiss ribbon case is there, 29A interpretation, 29A applicability of law mainly was discussed in this case. And they have mentioned कि NCLT and NCLAT members to be appointed, how the members to be appointed, what is the administrative support to be given by Ministry of Law, not by MCA. They have decided in this case. NCLAT should be in every state because there is no high court jurisdiction in the IBC. Then section 21 constitution of COC and 24 are discriminatory. Section 12A, do not derail the settlement process by requiring approval of at least 90% of the COC, and it is not violative of the Article 14. And establishment of information utility is also valid. RP has no adjudicatory powers. Section 18 lays down duty of RP. Even under Regulation 35A, RO to make the determination and apply to AA for appropriate relief. Section 29 is not contrary to the object or to be achieved by the court. So 29 ने challenge किया था, but they said कि करना तो बार-बार फोन आ रहा है. मोहिंदर जी आप बैकग्राउंड में नहीं जा रहा है. Sorry, म्यूट कर लीजिए. So section 29A में उन्होंने बोला कि जो अभी चल रहे हैं उसको तो चलने देते हैं. उनका नहीं, आपका जो चल रहा है आप आ जाओ वापसी, सारा पेमेंट कर दीजिए 1 महीने के अंदर, and then you can continue. So they have given the time for the 29 ongoing cases. And then exemption has been granted for MSME to the MSME for the 29A is valid. So they said कि okay, MSME की they have interpreted that the exemption which was given to MSME in section 29A is valid, and section 53 does not violate the Article 40. So these all the issues are discussed under Swiss ribbon. So in Supreme Court there are 3-4 cases where multiple issues has been discussed. One, COC of SR Steel, Swiss ribbon, ArcelorMittal. These 3 cases are, and Mobilex. In Mobilex there is only one case that dispute has been discussed at length. But in COC of SR Steel, Swiss ribbon, ArcelorMittal, they have discussed multiple issues of the law to bring the clarity on the IBC. सर ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए था. मुकुल रोहतगी वाज प्लीडिंग द केस इन द स्विस रिबन, एंड अपने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इंश्योर की. यस सर. Sir, one question, this administrative support through Ministry of Law and Justice instead of MCA, but sir, till date, I think NCLT and NCLAT are pro MCA, isn't it, sir? Sorry, come again. Sir, ये NCLAT और NCLT है, they are under MCA only, ना sir, Ministry of Corporate Affairs. सर कि जो भी IBC कोड के लिए आएंगे, that should be administrative support will be given through a Ministry of Law and Justice. They have given this guidance. Supreme Court has given this guidance. MCA के साथ नहीं मिलेगा उनको. So, but at present it is through its administrative support is given by Ministry of Corporate Affairs, sir, isn't it, sir? NCLT or NCLAT को तो sir. Not in my knowledge. I need to check. देखिए ऐसा है करुणा जी, हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि इस केस में क्या डिसीजन हुआ. मेनली वो है. हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर. हमें ये नहीं क्या होना चाहिए, हमें होना चाहिए नहीं पढ़ रहा, ना ही क्या करंट पोजीशन पढ़ रहे हैं. हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो उस केस में डिस्कस किया गया. जैसे अगर हम एनसीएलटी में जेट एयरवेज को वाला केस देखें तो उसका जजमेंट रिवर्स हो गया था एनसीएलटी में, लेकिन हमें एनसीएलटी वाला ही केस पढ़ना है. तो केसेस को हमें एज इट इज ही पढ़ना है, उसके आगे हम ना जाएं कि उसमें क्या होना चाहिए. उसमें अदरवाइज ना
कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा. आई थिंक राकेश तायल जी शुड कंटिन्यू and we can ask questions only related to the subject matter. Thank you, sir. So next is the dispute. So Mobilex innovations may they have defined that various issues relating to a dispute. Like under section 8.2, they have mentioned a dispute should be pre-existing before the receipt of notice of demand. ऐसा नहीं है कि once the notice of demand has been received and I will go raise the dispute after the receiving that demand notice. So before receipt or demand notice, there should be a proof that it is dispute is existed. Second point they have discussed in the 8.2a that it may be read as or. So in the dispute and in the Bear Act, it is written that existence of a dispute and pending suit or arbitration proceeding. It means that it has been challenged. Okay, it is written dispute and suit both are required. But in this case, Mobilex Innovations, they have cleared that and should be read as or. Only existence of dispute is enough. There might be or might not be a lawsuit going on against this. Then they have defined the scope of determination of NCLT while examining the application under section 9. When this case law came, at that time, the operational limit of application is 1 lakh. Now it is 1 crore. So this is also a question come in. What is the scope of determination by NCLT examining the application? So might be they have given 1 lakh or 1 lakh at that time if the MCQs are of that time only, but they might have updated now the MCQs. Documentary evidence should be submitted that debt due is payable and remain unpaid, and there is no pre-existence of dispute. So these all the 3 documents to be submitted to the NCLT and NCLT to examine this for the application under section 9. Then NCLT must have to reject the application if notice of dispute is received by creditor or there is a record of dispute with the information utility. Then section 9 application is not accepted. And so far as there is a real dispute as to the payment between the parties, dispute exists within the inclusive definition of section 5.6. And this case is also discussed here. Reference case will come. Madhusudan Govardhan and Madhu Woolen Industries. That inability to pay debt is no longer be a ground for winding up company under section 271 of the Companies Act. So this has been discussed in this case. So now we can come down to the सर इसी में सर एक छोटा सा इसमें अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है चल रहा है हमारा आर्बिट्रेशन तो इट इज ए डिस्प्यूट. किसी केस में ऐसा भी हुआ है कि जिसके अंदर आर्बिट्रेशन को डिस्प्यूट नहीं माना? नहीं, आर्बिट्रेशन को डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन है तो डिस्प्यूट तो एग्जिस्ट है ही ना, तभी आप आर्बिट्रेशन में गए हैं. तो बेसिकली हमारा सेक्शन 88 के लिए अगर आर्बिट्रेशन है तो उसको डिस्प्यूट माने. आर्बिट्रेशन में भी मे नॉट बी डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन में भी फॉर सर्टेन मैटर्स कि लेट से मेरे क्लेम के लिए नहीं है बट मेरी एस्केलेशन के लिए है या किसी और चीज के लिए आर्बिट्रेशन चल रहा है. नहीं, that should be related to dispute of the payment or the yes, that should be related to the dispute of the right that should be related to dispute. इस केस में debt मतलब वही था, arbitration should be gone with the related to the debt only against which you are filing the application. आप 10 केस में और arbitration करते रहो, it is not related thing. Right, can we go to the quiz? ऐप खोल लीजिए आप लोग. अच्छा राकेश जी, मैं एक बात बता दूं कि श्रीनिवास जी ने रिक्वेस्ट की है कि वो भी 10 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं अराउंड 8 o'clock. श्योर. वो ये बताएंगे कि तैयारी उन्होंने कैसे की, क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर हुआ था 31 जनवरी को. तो अच्छा, वो भी 10 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं. हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं वो. श्योर. हाँ जी. तो 10 मिनट बीच में उनको दे देंगे, काम करेंगे, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा. तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, 8 बजे के आसपास उनको टाइम दे देंगे थोड़ा. ठीक है, या फिर एक काम करेंगे, अभी ये क्विज करके and then there will be, I think so, only one slide is pending. Case referred we have done yesterday only, so we can do this quiz and then we can hand it over to Mr. हाँ, कोई नहीं, 8 बजे के आसपास दे देंगे उनको 5-10 मिनट के लिए. उसके बाद you can continue. Yes. Right. So anyone tried this app yesterday?
तो अच्छा राकेश जी, ये हाँ जी। कोशिश करिएगा कि अगर ये स्क्रीन पर ही पूरा क्वेश्चन आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यस सर, मैं अभी कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होगी ना, तो हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, जो देखेंगे उनके लिए भी फिर फायदा होगा उसमें। श्योर सर, श्योर हाँ श्योर, आई जी। विल डू दैट। So can you see the screen? It is visible. 739967. Seven six nine 967. 96 739 है मंदर जी, 739. हाँ जी, 739 967। 967. Only 5 has joined. तो 13 लोग तो यहीं पर ही हैं, 13 में हम दोनों निकाल भी दे तो 11 तो हैं। Shall I start? 6 persons have joined so far. चलिए स्टार्ट करते हैं सर। अरे म्यूजिक आ गया। So 5 are attempted. 4 has given rightly. This case is related to the partner, whether the CIRP can be initiated with the member of a partnership firm. So it is held no, it cannot be initiated against the member, whether he is a corporate debtor or not. It cannot be initiated. CIRP cannot be initiated. So he has to go for the
personal partnership for case which has not yet been notified. किसी ने भी नहीं किया, दोबारा चलाता हूँ. Someone has attempted it or not? Not attempted. Shall we restart the question? म्यूट कहाँ से होगा पता नहीं. धनिया था ना मैं, हाँ धनिया. देखिए, जो लोग किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्विज में, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर उनको आंसर मालूम है तो.
Am I audible? Rakesh ji, you are audible. Yeah. Okay. So what I'm saying that I have covered almost all the quizzes. I think all the quizzes rather. If anything remaining or you want to repeat any quiz, we can do that. Or we can first hear out Mr. Srinivas' valuable experience and tips on the issue, and then we can continue. राकेश जी मैंने उनको बोला था कि 8 बजे ज्वाइन कर Okay, he will join at 8 o'clock. Okay. So someone want to repeat any quiz? It's on the, if you can share the screen, we can repeat the quiz, or I can also go through the case laws. This my 14-page case law summary which I have prepared. हाँ राकेश जी वो रिवाइज करा दीजिए बिल्कुल. हाँ. उसको रिवाइज करा दीजिए. So let it be an interactive session then. Yes. Otherwise क्या हो रहा है, कुछ पार्टिसिपेट करें कुछ नहीं करें, वो फिर उसमें दिक्कत हो रही है. It should be an interactive session. Yes. Let us remind. So everyone has my PPT with them, right? So just give me quick that what are the 4 case laws relating to government dues. Either you can speak or you can put in the chat box also. So this one, Ultra Nathdwara, Om Prakash, Kiran Global, and fourth one I don't remember. Yeah. So Ultra Nathdwara, Om Prakash was relating to TDS. Kiran Global was relating to GST portal can be operated by IRP. Right. And Ultra Nathdwara was that whatever अल्टरनाथ के द्वार पहुंच गए थे जीएसटी डिमांड. If the time has been barred, I think so it has to be taken before. That was a thing in before the resolution plan. उन्होंने कहा once resolution plan has been approved and you have been given something. Even RP told them कि भाई nothing was due to the operational creditor, but still we have made them some payment, but still they are after me. Yes, sir. Good. So which one was the fourth one? Okay. Yeah, these are the 4 cases. One in the NCLT. So yesterday also we have discussed the case. Let me put the government dues again. Yeah. So 2 are in the NCLT and 2 are of the High Court. So Kiran Global, the GST portal access is required. Om Prakash Aggarwal, reduction of TDS is there on the sale of the liquidator. And Ultra Nathdwara, GST demand is raised after approval of the resolution plan, and they said no. Now no one is entertained. And Leo Edible Fats, they have said IT department has not the priority over the claims, and attachment order to any property should be set aside. अभी मुझे ध्यान आया राकेश जी, इसको कोलू करके भी याद कर सकते हैं. के से किरण ग्लोबल, ओ से ओम प्रकाश, एल से लियो ऑडिबल और अल्ट्राटेक नाथद्वारा. कोलू. So what will I do? I will just insert. I will, yes, no sir, these are the tips and things which we, मतलब इससे क्या है, हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है. इस तरह हमें ऐसे याद करता हूँ. मतलब तो उससे ना थोड़ा ध्यान रहेगा, भूलेगा नहीं बंदा. Yeah, and it is also in the reverse order. We can put it different way. In the Kolu only, and it will be the Kiran Global is the first case where GST approval is required. These are the 4 cases in the government dues. What is the home buyer cases discussed? Can anyone other one explain? So Chitra Sharma and Pioneer Urban Land. I remember these 2 cases of home buyers. You can have that PPT with you, because just you remember 2, just explain the 2 more and one liner. Just 1 page if you can have this one or this one. So you can also correlate what in the Chitra Sharma discussed, what is in the Pioneer Urban Land discussed, right? And what has been discussed in the Umang Realtek and Pal Infra. So it was relating to home buyers, and home buyers are considered as financial creditors, and it was already in the explanation, but they have enlarged the explanation part, sir, isn't it? No, they are not enlarged. And yesterday also we have put some wrong points. So there, so let me again explain for the benefit of all. Chitra Sharma case mein there is no amendment or no enhancement was there. Case was before the Supreme Court, and what happened that they have this IBC comes with a IBBI
comes with a clarification that they have to file their claims under Form F. So Form C and Form D are for operational financial creditors. So they have been asked to file the forms as the other creditors. Then the notification, then this explanation comes in between when the order is going on 6th June 2018, that they are the financial creditors, and they have added an explanations also in the act itself and in section 58F, that home buyer will be treated as the class of creditors in the financial creditor. This amendment has been challenged, this explanation has been challenged before the Supreme Court and discussed in the Pioneer Urban Land. So this is sequential. And in that Pioneer Urban Land, the Supreme Court decided that this is not the enhancement of the scope of the original section, it is only a clarificatory nature. The amendment is in the clarificatory nature, and home buyer should be the part is a financial creditor. चित्रा शर्मा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि होम बायर्स आर द part of should be the part of COC, and they are the financial creditor, and COC has been reconstituted in that case. Is the difference between two case laws clear, Karuna ji? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yeah. And in Umang Realtek, they have mentioned कि okay, आप CIRP raise कर रहे हैं जो that should be project wise. That should not be against the all the projects of the developer. You are the home buyer of one project, and CRP should be initiated against the one project only, and CRP can be reversed also if promoter and or any intervener financer is going to complete the project, because ultimate objective of this the home buyers and the developers is that home buyers will get the home, not the refund. And in NCLT case of PAL Infra, the voting rights of the authorized representative has been discussed. I think it was clear yesterday. Gupta ji explained it very well, that there are the home buyers having the 72% and 28% are the other financial creditors. So when the question of voting came in, then there is under section 25, it is mandated that if 51% of the voting is given, so authorized representative have to act accordingly. So AR को accordingly act करना पड़ेगा और 100% वोट मानी जाएगी. इन्होंने IRP को रिप्लेस कर दिया था. Clear? What are the case laws for Limitation Act? 3 case laws in the Supreme Court. Please be interactive. Sagar Sharma, Babulal Gurjar. Great. And one was BK. I remember BK word. BK Education Society. Great. Yes. Great. ऐसे अच्छा लग रहा है कि सब लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. अब जरा सागर शर्मा के केस में क्या डिस्कस हुआ था, जस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए. So if it comes from you guys, then it will be more fruitful rather than us, so that we can see that you are understanding the case law and it will be remember. सर इसमें सागर शर्मा में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आईबीसी के था कि इज नॉट रेलेवेंट, एंड सेक्शन 137 आपका लिमिटेशन एक्ट का जो है वो बेसिकली एप्लीकेबल होगा. ये जो पुराने केसेस पड़े हुए हैं उसको हम अपने जो अपना कमेंसमेंट ऑफ आईबीसी है उससे नहीं लेंगे इसको. Right. So if the 3 years of the limitation act should not start from the 1st December of 2016. Yes, but, yes. They would be started whenever default is happened. So it should not be. शुरू में confusion हुआ था कि 3 साल IBC amendment से दोबारा reinstate हो जाएंगे. और बाबूलाल के अंदर सर वही 137 का आया था, limitation could be extended because of the acknowledgement of the liability. Right. वो आईबीसी को तो आईबीसी ओवररूल तो नहीं करेगा लिमिटेशन को, बट 137 जो था वो कंसीडर हुआ था कि उस केस के अंदर एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी. In BK Educational, section 5 of Limitation Act is also discussed. In Babulal Gurjar, section 18 of the case was discussed. नहीं बाबूलाल के सारी इसमें बीके के अंदर सर दो सारी पूरा डिटेल डिस्कशन था. आपका सेक्शन 5 भी हो गया था इसके अंदर डिस्कस, और 137 भी डिस्कस हो गया था.
of the Limitation Act. And और उन्होंने बोला था कि अगर कोई रीजन है, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप प्रोसीडिंग नहीं कर पाए और केस टाइम बार्ड हो गया, कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, तो आप सेक्शन 5 के अंदर उसको आप condonation of delay, right? So section 5 is related to condonation of delay basically, and we have discussed at length of the section 5 of the Limitation Act that is applicable to CIRP also. Yes. And in Babular Gurjar case also they have mentioned referred the case of BK Educational. Good. What about the COC? Okay, let me put another way. Here are the case laws, right? So now we can discuss what is in the MTech auto. You can write in the chat box also. I'm not sure I understand. The one-liners are there with you. You can check that and just come out what is in the MTech auto. You can speak also, you can write in the chat box also. But please make the active mode session. COC reconstitutivity और extension था आपका exclusion period का, क्योंकि वो काफी बढ़ गया था टाइम, तो जो litigation का period था उसको exclude किया गया था. Right. और COC जो reconstitute हुआ था, that is because the resolution applicant जो था he fails to execute the plan. That's why they said कि okay, we are reconstituting the COC. Yes. And then you can consider the alternate plan. बिल्कुल. Yeah, CIRP is not. Basically time दिया था, accommodation दिया था कि दोबारा revive हो जाए शायद कम. Yes sir, yes, right. What is the Sterling SCZ SRI Infra? सर स्टर्लिंग के अंदर वो आपका अटैचमेंट ऑर्डर का केस था मेरे ख्याल से, जो पीएमएलए का अटैचमेंट ऑर्डर वगैरह हुआ था. हाँ जी, उसको सेट असाइड कर दिया था कि आईबीसी जो है वो ओवररूल करेगा पीएमएलए को. Right. So what I suggest to all the participants 10 or 11 whatsoever, if they have the PPT or they can write somewhere, so they can write these bullet points of what come in our mind when we read this. So it will be easy for everyone that what is in this case. Yeah, and it is good, Tajendra ji, you are very interactive and I appreciate some more participants also enter. सर 20,000 होम बायर्स की जिम्मेवारी लेके बैठे हुए हैं सर, पढ़ना पड़ेगा. आगे काफी आगे तक लड़ाई है सर. 5 साल से हम लोग सीआईआरपी में लड़ रहे हैं इस केस. Okay. और हमारे सामने आ जाते हैं फली नरीमन जी, आ जाते हैं सर. हम छोटे से बच्चे हैं सर. नहीं ऐसी बात नहीं सर. What is ASL Limited? सर उसका तो वही था जो वीडियोकॉन का चक्कर था अपना, मल्टीपल. हाँ, मल्टीपल कॉर्पोरेट डेटर्स के अगेंस्ट में एक सिंगल प्लान देना. हाँ जी, सिंगल प्लान देना था. उसमें क्या था कि सीआईआरपी ही मल्टीपल कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में एक फाइल की थी. हाँ जी. एंड यहाँ पे क्या था कि आप मल्टीपल कॉर्पोरेट डेटर्स के अगेंस्ट में एक सबका कंसोलिडेट करके एक सिंगल प्लान दे सकते हैं. एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम. सो स्पेक्ट्रम का मैंने एक दिया था आज, जो नाम दिया था वो कौन सा केस था? अपना सुप्रीम कोर्ट का केस था स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस. हाँ जी सर. राइट. तो इसमें भी स्पेक्ट्रम डिपेंडेंट था एयरसेल का, एयरसेल की सब्सिडरी के ऊपर. तो उन्होंने कहा ठीक है, इकट्ठा सब डिपेंडेंट है, तो सब का आप एक रिजोल्यूशन प्लान दे दीजिए. वीडियोकॉन में भी ये था कि वो उसका कोई ट्यूब कोई बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था. बेसिकली दोनों एक तरीके से है एयरसेल. राइट. तो राकेश जी टीवीएस शिवा प्रसाद जी ने ज्वाइन कर लिया. ओके श्योर. आपको भी 10 मिनट रेस्ट मिल जाएगा. हाँ जी. और आप मेंबर्स को भी कुछ गाइडेंस. वेलकम श्रीनिवास जी, एंड आई एम हैंडिंग ओवर टू मिस्टर श्रीनिवास who will share valuable experience with the team, all the members to clear the exam. हाँ, राकेश जी ये वाला स्टॉप शेयर कर दीजिए 1 मिनट के लिए, दोबारा शेयर कर लेंगे बाद में, ये जो शेयर स्क्रीन हो रहा. हाँ जी. So we are pleased to have amongst us TVS Shiva Prasad ji, who qualified the exam on 31st of January, and he has been kind enough to guide us how to prepare for the exam. So Shiva Prasad ji, please. Namaste Gupta ji and all other participants. Really, I am very much honored to meet you all. And without the help of Gupta ji, I am very much grateful to Gupta ji
for conducting the classes. And not only his knowledge, but also his good manners, friendly nature, etc. Reasons for my आपका reading the examination. शिवा प्रसाद जी बहुत इको हो रहा है. Lot of echo is there. Actually, my laptop में भी मैं login किया था, मैं log out कर दूँगा. Okay, okay. अभी म्यूट हो गया सर. हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है? Yes, yes. Now it's perfect. Okay. Then again, I repeat. Without the help of Gupta ji, I would not have passed the examination. With pride and humbleness, I acknowledge his help. Really, he is somebody in privately, one of the faculty members who taught one of the classes in evaluation commented that say Gupta is doing a very great service to the aspirants like this. And he commented that I don't know how he is doing all this selfless service, ignoring his own practice center. That shows the good opinion about the Gupta ji, not only among the participants like us, not simply the aspirants like us, but all the even the faculty also who taught. Then actually, I was not very much keen about passing the examination, but for Gupta ji's generous fee structure, of course, it doesn't go to his coffers, to his pocket, it goes to some NGO. And really, I appreciate you, Gupta ji. भगवान आपको लंबी उम्र दे, अच्छी तबीयत दे, आप सभी को ऐसा सेवा करने के लिए. Then for some of the topics, I simply relied on Guptaji's classes only, in videos for allied laws. I didn't, I couldn't read any material, though I got Sekar's book, CSG Sekar's book, which I followed, apart from Guptaji's material. Guptaji has already shared so much of material. I took printout of it, I followed it. Apart from that, I purchased Sekar's book. And I didn't touch even the second part of the second volume of the book because I didn't have time. I simply relied on videos of Guptaji for allied laws. Totally, I depended on him. Say, particularly LLP Act, the Partnership Act, and then SURFACE, Negotiable Enhancement Act, the Workman Compensation Act. Likewise, there are so many like SEBI, then Companies Act, etc. I advise those who cannot afford to spare some time to read the allied laws, you simply watch Guptaji's classes at least some 2 to 3 times. Of course, you watch all the videos, not simply these alone. But if you don't have time to study the allied laws, because there are so many laws and there's so much of material to be remembered. If you can do it, then follow the books apart from watching Guptaji's classes or Guptaji's videos again. If you don't have, then at least watch some 2 to 3 times. First, initially you can watch the videos in a normal speed. Then later, if you are comfortable with it, then go with 1.25 to 1.75 speed of the recorded classes, as you please, as you are comfortable with. I don't advise any particular speed. If you are not comfortable with the videos, then go with the normal speed of it. Then, as you know, that say we had to be very much thorough with the code and regulations. So there is no shortcut to it. Say what I did is that I took the printout from the IBBA site. Then I have got it bound and I started reading it very leisurely, very slowly, because each word is very important. Each sentence is very important. So I went on underlining or highlighting depending on the need. If it is very much important, then highlighted, then otherwise important point only, then took a pencil or a sketch pen and I went on underlining. Then later I reviewed it. Once I am thoroughly comfortable with the code, then I followed Guptaji's material, then Sekar's book. Then there also I did the same thing. I went on underlining or highlighting the important points. Then I read at least some 2 to 3 times.
and particularly highlight on the Partnership Act and then the LLP Act and then IP regulations, IPA regulations, etc. Because some case studies are based on these Partnership Act and Companies Act, then IPA rules and IP regulations, etc. So for this, we should be very much thorough. Of course, these are all covered in the code and regulations, but again, because of the case studies, we have to be very much thorough. So probably you may be knowing that I secured 62.5, but for the help of Gupta ji, I would not have succeeded, for which I am ever grateful to him. And then do not go on betting. I say only when you know about the answer and sure of the answer, go for it. Otherwise, don't. In the second round, if you feel that you have to secure some more marks, and where you are confident that either out of the two answers, probable answers, one could be chosen, then only you take the risk. Otherwise, don't. Say if you don't know more than, if you are not sure about two only out of the four answers, four options, don't go beyond that. Then say sometimes it may even harm us instead of securing more marks. Say, had one of my case studies went wrong and the normal question 1 or 2 went wrong, then I would have failed with 59 or less than that. So that is why please don't gamble. Only when you are sure about the particular answer, go for it. That is what I advise. And so those youngsters may go for reading in the electronic media, like reading from their laptop or what you call mobile or tablet, etc., or desktop. But I advise to take a printout of it, or otherwise buy a book of your choice, either Taxman or Sekar's book, or simply rely on Guptaji's material, whatever you like, what you feel appropriate to you. Then go on underlining the important points, because just before the examination, 1 day or 2 days before the examination, you referred to those important points which you thought it is very important. And everything looks very important because I had underlined so many things, so many points, paragraphs, etc. Everything looked important because we can be asked any question from any point. See, because they want to fix us in a what you call tight position, tight spot, so that we will be failing, because they want to restrict the number of pass percentage. Say they want to restrict it, so they can put tough questions, so they will confuse us. So that is why I went on underlining or highlighting it. Then analysis. You see, unless case study analysis, unless we are thorough with the subject, then we cannot go for the correct analysis of the case study which was given to us. I got, of course, everybody gets the same number of case studies. One is on Companies Act. So briefly, I will summarize and I will explain the case studies which I got. Regarding the company law, say I got a case study like this. So there are 3 brothers. They formed a company and they were producing some mobile accessories. One of them got out of the company. Then he set up another company on his own with somebody. Then another brother, being a CA, he wants to come out of the company because it is not running profitably after the exit of one of their brothers. So he is being a chartered accountant. He wants to kind of resume his practice with another friend. Then only one is left out. Though he has got the management capabilities and all that, they decided to wind up the company. Then on this situation, we were given some questions. And one of the questions is, say, director's remuneration, whether we can give them director's remuneration, because one of the brothers who already left the company owes something to the company. And the company in turn owes some sitting fees to one of the directors who had already left the company. So whether these can be set off, whether they can be paid separately, whether the brother has to pay first, I mean, the director who left the company has to pay first, or whether it can be set off, or whether sitting fees can be paid to the whole-time director or not. That is one question. Then whether being a profitable company and with only tax use only, and without other liabilities, and whether they can go for fast track
fast track insolvency or not. And likewise, some questions are given. So unless we are thorough with the code, we cannot answer them. And we should be very much careful about the analysis. Though we may be knowing some the theory, but still, say we should be very much careful in analyzing the situation. And in the new syllabus, the case analysis are given more importance. That's why 70% goes to the case analysis. So we should be very much not only with the theory, but also we should be able to analyze them correctly. So please concentrate on that one also. Problem. I didn't find any material for case studies. I have not gone through any. And regarding the what do you call IP related ethics and business ethics and business ethics, I found some material, some case studies by Gupta ji. I borrowed that one. It is very much useful, not only for the examination perspective. It is useful for our practice in future also. Please be thorough with all these cases. Then, as I told, say, watch the videos without fail. Because Gupta ji has arranged some of the best lectures. Say, when I attend the classes some 2-3 times last year, say one gentleman from Jaipur had CA and an advocate, so I believe, I remember, had presented his presentation on Surface Act and RDDB. His lecture is very much sufficient. Yes. And that is already uploaded on our YouTube channel. It is very good, sir. Mr. Rajvanshi. Anji. Mr. Rajvanshi, yes. Anji. Likewise, Gupta ji has brought arranged the very best faculty available. So it shows how much goodwill Gupta ji has got among the professionals. So without such a goodwill, probably nobody would have spared their valuable time to teach us, but without any reward or compensation. So, such being the help rendered by our Gupta ji, let us use this opportunity to gain knowledge in past examination and pay our gratitude to Gupta ji. And regarding others also, and regarding the IPA rules, I got another case study like in an IPA, there are some certain partners. One of them has got some practice with one of the clients, who is being dealt by other client, and he receives some remuneration from that particular client who is being attended by another partner. Say that is some less than 10% or whatever the percentage is. So unless we are sure that say the percentage earned, the percentage of income earned from the particular client should not exceed this much limit, he cannot take the assignment. Likewise, so we should be very much thorough about the business ethics, then IPA rules, IP rules, etc. So I advise everyone not to leave any point or any chapter or any paragraph in the code or regulations. Please be very much thorough with all these rules and regulations. And if you have got any specific doubt or any query, please raise it so that if I know anything, I can clarify it. Anyone has any questions to ask? शिवा प्रसाद जी, लगता है 500 हो गए हमारे अब, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली देयर इज न्यूज, बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं एंड वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2018, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. भी क्रेडिट आपको ही मिलेगी. And they are still in touch with me, and whenever they even in their day-to-day practice they consult me and I guide them. तो मेरा एग्जाम रिजल्ट आने के बाद, मेरा परिवार के बाद, जिसको मैं ये मेरा रिजल्ट बताया था ना, उसमें से आप पहली या दूसरी व्यक्ति होगा, तो मैं भेजा था.
ये तो है. On passing the insolvency examination, because I was more interested in valuation examination. Valuation. I made to clear. And later, because Gupta ji is conducting the classes for insolvency also, and moreover, the fees charge is very, very less. Whether I'm interested in insolvency examination or not, I said, then later it came to my desk. Sir, in valuation exam, that I'm postgraduate in commerce. So can I appear in that exam, sir? Yes, if it is finance, then. No. At it, I'm accountancy and business set. Because I am also banker and from Canara Bank only, and I also done CIB and this, Okay. So whether I'm eligible for this, Gupta Yes, sir, yes. just tell me, sir. गुप्ता जी, ऐसा है चंदेल जी, वो तो आप IBBI की वेबसाइट पे you can check with them कि what is the eligibility criteria. Actually, they allow postgraduate in certain disciplines only. So you have to check your discipline. There it is written postgraduate in finance. Okay. So it means it has to be in finance only. This means I'm not eligible for that. तो M.Com में क्या है? दोबारा कर लो. M.Com accountancy and business stats सर है ना? तो दोबारा कर लो ना सर finance में M.Com. चल ठीक. और क्या? 2 साल में M.Com हो जाएगी. नहीं तो being a banker, IBC is very good for you. IBC is good, sir. IBC is good. To my knowledge or to my belief, you are eligible because M.Com is on finance only. No? That CIB as a banker, every banker is doing CIB that I have done. And sir, Gupta sir, I have also done that directorship exam, sir, that MCA, no? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. पर मैं बता दूं, मैंने कोई एग्जाम पास नहीं किया. मैंने डायरेक्टर वाला भी नहीं किया, वैल्यूएशन वाला भी नहीं किया, आईपी वाला भी नहीं किया. और अभी मुझे इसलिए नहीं किया है कि आप एक बार आपका राज बताए थे. ये तो है. आपकी कोई रिश्तेदार, खास रिश्तेदार गुजर गए करके उस दिन बोल रहे थे. नहीं तो ऐसा नहीं है. उसमें ये है कि भाई ठीक है, देखो ये भी एक मिशन है, तो इस मिशन को हम कंप्लीट करना चाहते हैं. अगर हम खुद इस चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो फिर उतना टाइम थोड़े रहेगा हमारे पास. ये बात अभी तो गुप्ता जी पेपर आप ही सेट कर रहे हैं. You are hidden. मुझे ऐसा लग रहा है यही बना आप ही भेज रहे हैं. बल्कि बैंक ने भी मुझे इनवाइट किया है कि भाई आप हमारे एम्प्लॉयज को गाइड कर दो IBC में. अगर गुरुजी सारे IAS बनाने लग गए, IAS बन गए, फिर बाकी को IAS कौन बनाएगा? तो IP बनाई जाओ. ओके जी, ओके. थैंक यू शिवा प्रसाद जी, इट वाज रियली वंडरफुल. एंड हाँ जी, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो या ग्रुप में भी आप सकते हो. Definitely, yes. So we are again thankful to TVS Shiva Prasad ji for giving his valuable guidance on how to pass the exam. Now we again invite Rakesh Tayal ji to restart his deliberation on the case laws. Rakesh Tayal ji, please. नमस्ते. इजाजत दीजिए मैं छोड़ने के लिए. Hello. Am I audible? Yes. You are very much audible. Yeah. So when we are on the break, I am just checking about this Adhunik Metallics case law. Where is the screen going? Yeah. So Mohinder ji, this is the case law I have downloaded from the IBI website only, and which is in our syllabus. This is the citation on the IBI syllabus also. Okay. Right. So, and in the book, what we have referred, might be there is some misprinting or something like that. But I believe that this is the case law, and you can check it. Matter of Adhunik Metallics 118 CB 2019 connected with arising out of CP 373. Right. And in this case only, they have decided about the costs between the CIRP date and insolvency date.
Okay. Not the extension of time. Not the extension of time. So we can just It may quickly be, go through this. it may be misprinted in the book of. Maybe, or they might have citation is maybe different. So there are 3-4 cases on the website about the Adhunik metallics. Okay, okay. 24 June, 13th May, 10th January. So various, but in our course, this 10th January 20 is there. This is 2018. 201, yeah, this one. 2018 97 टैक्समैन कुछ दिया इसने नोट को. हाँ Yes, yes, yes. बिल्कुल. इसमें ना वो महेंद्र जी साइटेशन से ही पढ़ना है ना हमारे को. हाँ जी जी. तो इसमें क्या है, मैं भी पढ़ देता हूं जो हमारी वेबसाइट पर लिखा हुआ है. इसमें वो ये कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आधुनिक मेटल में द लिक्विडेटर फाइल्ड एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिटी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स received between July 18 and July 7, 2019, when the CD was supposed to be revived under resolution plan, because resolution plan was approved on July 17, 2018. Certain claims came between after the approval and between so actually some claims came in between. Once the resolution plan is approved and the approval is pending, what to do about that claim? So adjudicating authority held that the claims received during the period can neither be treated as part of insolvency resolution process cost, nor do they fall under liquidation cost, and hence cannot be accorded priority over other dues. तो उन्होंने कहा इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होता है अगर आप इंसॉल्वेंसी कॉस्ट में डाल दो या लिक्विडेशन कॉस्ट में डाल दो तो प्रायोरिटी मिलेगी. देखिए ऐसा है, कोई भी क्लेम अगर पैसा होगा तो मिलेगा ही. पहली बात तो ये कि क्लेम ड्यू है नहीं है. दूसरी बात इसमें प्रायोरिटी की बात आ जाती है. तो प्रायोरिटी इन क्लेम्स को नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि उसने ये पूछा था कि भाई इन क्लेम्स का हमें करना क्या है. ये लिक्विडेटर ने क्लैरिफिकेशन सॉर्ट की थी कि भाई ऐसा है कि जुलाई 18, 2018 और जुलाई 7, 2019 के बीच में मुझे जो है कुछ क्लेम मिले, तो मैं उन क्लेम का क्या करूं. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई ना तो ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है, ना ये लिक्विडेशन कॉस्ट है, और तो इनको प्रायोरिटी पे नहीं मिल सकता. प्रायोरिटी पे नहीं मिल सकता इसका मतलब पेमेंट तो होगी इनको, लेकिन जैसे नॉर्मल अगर जब भी ड्यूज इनका आएगा जिस लाइन में उस हिसाब से पेमेंट होगी. तो सर ये सेम नेम से कई केस भी हो सकते हैं, कई पॉइंट. ऐसा ना जी, देखिए ऐसा होता है जो साइटेशन है ना, साइटेशन तो एक ही होती है ना, साइटेशन तो अलग नहीं होती. आपको क्या करना है, आपको आईबीबीआई की साइट पे जाना है, वहां पर लिस्ट ऑफ केसेस दे रखी है और उसमें साइटेशन भी है. तो उसी साइट, कई बार क्या होता है बुक में भी दूसरी साइटेशन से आ जाता है वो केस, तो आपको साइटेशन से ही जाना है. और वहां तो पूरा टेक्स्ट भी दे रखा है इसका. वो तो एज जैसे ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला केस है, हमारे पास तो पूरा केस भी है, जैसे हमने तो पूरे डाउनलोड भी कर रखे हैं. ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया गुप्ता जी अभी पूरा केस जो है. बस 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 बढ़िया. on the group also. हाँ. So in this you can see that resolution plan is approved on 17 July 18. हाँ हाँ. उसके बाद एक साल उसको लग गया LHG को हाँ to हाँ. implement this, but after 1 year he is not able to implement it, and then liquidation order has been passed. हाँ बिल्कुल. तो 17 जुलाई 2018 से 2019 8 जुलाई 2019 तक जब उसने लिक्विडेशन का ऑर्डर पास किया था, उसके बीच में कुछ क्लेम्स आए, कुछ एक्सपेंसेस हुए. देन ही गो टू द क्लैरिफिकेशन कि द एप्लीकेंट स्टेट्स द सेवरल क्लेम्स एज ऑन लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट हैव बीन रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट व्हिच इंक्लूड्स अमाउंट accrued and under the period between 18 July 2018 means when the resolution order is passed, and then till July 7th July 2019 when the liquidation order is passed. So this is the non implementation period they have defined. So during non implementation period जो भी आपके एक्सपेंस है उनका क्या करना है. उन्होंने कहा भैया they are not the insolvency cost. हाँ, ना ही वो लिक्विडेशन कॉस्ट है, ना लिक्विडेशन कॉस्ट, मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, पेमेंट तो होगी जो भी. क्योंकि होता क्या है कि देखिए क्लेम किसी भी स्टेज पे आ जाए, भाई लिक्विडेशन से पहले आ जाए, लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो उससे पहले कोई भी क्लेम आ जाए, क्लेम तो एंटरटेन हो जाता है, क्लेम में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें बात थी कि भाई उसको वो कह रहा था लिक्विडेटर ने पूछा. हाँ, प्रायोरिटी की बात थी. लेकिन वो बुक जो मैंने पढ़ी उसमें कुछ और ही लिख रखा था, इसलिए गलत है वो. कोई बात नहीं, देखो हम उसमें नहीं जाए, हमें टेक्स्ट से पढ़ लेना है कि टेक्स्ट में एक बार डबल चेक कर लीजिए बेसिकली टेक्स्ट में और लिस्ट ऑफ केस में. यू कैन देन डिसाइड व्हिच वन इज. या वी कैन डिस्कस देन ऑफलाइन अगेन इफ एनी डाउट. बिल्कुल. कई बार क्या होता है, समटाइम्स इन ए बिट टू ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स
कई बार ना वो पूरी चीज उसमें कन्वे नहीं हो पाती, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि देखिए भाई, ऑथर ने अगले उन्हें उसको 2 लाइन में, 4 लाइन में, 2 पैरे में लिखना है। अब एक जो 150 पेज की जजमेंट है उसको आप 4 पेज में, 4 लाइन में बताना चाहोगे, तो कई बार पूरी चीजें कन्वे नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये उससे जाना है, टेक्स्ट से। भाई जो उसमें लिखा है, जो उसको समझ में आएगा वो हमें भी समझ में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा केस आप पढ़ लो वहां से। राकेश जी प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट सर, बस मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा आईपैड पे चला गया। कोई नहीं, आराम से। आ गया। Am I audible now? Yes. Yes. Okay. So let us start again. Continue again. Sorry. With the where we are in the Adhunik metallics. So in Adhunik metallics, we have discussed about the. आप दोबारा म्यूट हो गए राकेश जी। हाँ, अब थोड़ी इको आ रही है, आवाज तो आ रही है आपकी, लेकिन एक तो थोड़ा ब्रेकेज है और फिर इको भी है। हेलो। हाँ जी राकेश जी, आ रही है आवाज? अब क्लियर है? आवाज आ रही है। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ, हमारे लिए टेक्सटाइल्स। तो तजिंदर जी स्टार्ट कीजिए। अब नाम ले लेके पूछना पड़ेगा मुझे। Now I have to ask by name and one has to speak. Either they have to get this PPT or the slide. आ रही है बार बार राकेश जी आपकी? ये ब्लूटूथ में कई बार ऐसा हो जाता। नहीं आ रही सर आवाज। आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी आएगी। अब आ गई। Now I think it should continue. It should not. ओके ठीक है। Yes sir. So sir, we are at the Hamarle textiles. So in the Hamarle textiles, what has been discussed, we are at that part. Can anyone just brief down? Now anyone can have a hint on Hamarle textiles, the NCLT case. सर इसको डाला इन्होंने लिक्विडेशन वैल्यू पे, मेरा म्यूट था सर, मुझे आइडिया, लिक्विडेशन वैल्यू पे डाला गया था ये केस। हाँ। रेजोल्यूशन प्लान वाज ऑन द लिक्विडेशन वैल्यू, और एनसीएलटी ने देखा कि नहीं है,
इसको यहीं क्लोज करे, चैप्टर क्लोज करे, पैसे कलेक्ट करे और घर जाए। इसमें क्या था सर कि रिजोल्यूशन प्लान जो आया था दैट इज लोअर देन द लिक्विडेशन वैल्यू. Yes. And NCLT said, okay, we are not going to discuss the commercial wisdom of the COC, and then they are allowed to approve the resolution plan. So this is in the हमारे लिए textiles कि जो मिलता है उस पे करके नक्की करो, जो मिलता है वही करें, अपने घर जाएं. right. In the coastal projects, राकेश जी इसमें एक और पॉइंट भी तो था. हाँ जी सर. इसमें ये पॉइंट था कि भाई जो क्लेम जो है वो कोई जरूरी नहीं कि मैच्योर्ड हो, जो डेट पेएबल इन फ्यूचर है उसको कंसिडर करने की भी बात थी इसमें. हाँ जी. वो एनसीएलटी हेल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द क्लेम सबमिटेड बाय द क्रेडिटर शुड बी ए क्लेम मैच्योर्ड ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट व्हिच इज ड्यू इन फ्यूचर ऑन इट्स मैच्योरिटी. तो ये जो है उसके लिए भी क्लेम फाइल कर सकते हैं. वो सिर्फ ये नहीं कि भाई जो मैच्योर हो गए उसको ही कंसिडर करे, बाकी को रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं. तो जो अनमेच्योर्ड क्लेम्स हैं इंक्लूडिंग अनइन्वोक्ड गारंटीज दे कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. तो जो अनमेच्योर्ड क्लेम्स हैं, जो फ्यूचर डेट्स हैं, उसकी भी बात करता है. राइट सर, थैंक यू गुप्ता जी. In the coastal projects, they have decided on the resolution plan after CRP period can be admitted. Just you have to now start, because yesterday we have spent 3 hours, today almost 1 hour. So I think everyone has the PPT. You can open on the mobile phones if you don't have, or you can open the PPT on the laptop and just come out what you comes in your mind through these case laws. Quickly we can sum up in half an hour if everyone participates. Because आप लोग बोलेंगे तो बाकियों को सुनाई देगा, and then they will also interacting, and then it will be easy to learn. चाहे आप बुक से ही पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, पीपीटी से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो. एग्जाम नहीं है, it's not exam. Otherwise I will speak only, बिल्कुल, and I have speak for last 3 hours, yesterday also, today also. But बिल्कुल now ठीक I बात want है. everyone to come out. सर ये रेजोल्यूशन प्लान आया था आफ्टर दिस सीआरपी, एंड उसको एनसीएलटी ने मान लिया कि कोई बात नहीं. जबकि वैसे इफ यू आस्क मी, वो एनसीएलटी कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द आईबीसी. उसके पास स्पेशल पावर नहीं है कोई ऐसी, बट इस केस के अंदर ऐसा हुआ था सर. CIP पीरियड के बाद भी they have accepted the resolution plan because ultimate goal of the code they have given, the objective of the code is to keep the going company as a going concern. अपने को liquidate नहीं करना है, so we have to, they have accepted this. Yes. बट जो गुजरात एनआरई को, ये सर लिक्विडेशन वाला केस है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो स्ट्राइक हो गई थी एम्प्लॉइज की काफी ज्यादा, एंड उसके ऊपर भी लिक्विडेटर के ऊपर भी केस वेस हो गया था कुछ. ये कोई वो गुजरात एनआरई कोक में सर क्या था कि लक्ष्मी विलास बैंक का केस था ये, जिसमें 2.49% सेक्शन 52 के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपने राइट रिलिक्विश नहीं किए थे. सो दे डिडंट वेट फॉर दैट एंड देन सेड कि वी आर गोइंग फॉर द लिक्विडेशन ऑर्डर ओनली. So you are right that this is related to liquidation. So when we discussed about the liquidation case, then this is the हमारले वाला और ये गुजरात एनआरई को, both are the liquidation related cases. मगर इसका कुछ एम्प्लॉइज का भी था, यूनियन वगैरह का कुछ हो गया था, चक्कर वक्कर कुछ ऐसा था. लिक्विडेटर के अगेंस्ट भी केस फाइल हो गया था. That I need to check. मेरे ख्याल किसी और में होगा. किसी और में होगा वो सर, इसमें नहीं है, वो कहीं और होगा. The next is Jet Airways. Jet Airways is the famous case. नीदरलैंड में इनकी assets थी कुछ, और नीदरलैंड कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया था, बट अपने एनसीएलटी ने बोला उसको साइड में रखो और सीआईआरपी इंडिया में चलाओ. किरण ग्लोबल और इसमें एक और चीज थी राकेश जी, एनसीएलटी ने कहा कि वी कैन नॉट गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर पास्ड बाय ए फॉरेन कोर्ट. तो बल्कि ऑल्दो एनसीएलटी रिवर्स दिस जजमेंट, उन्होंने कहा कि वी विल टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट, और उसको भी आप सीओसी में ले आओ, वो बाहर वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है. लेकिन एनसीएलटी ने कहा कि वी कैन नॉट गिव इफेक्ट टू ए फॉरेन जजमेंट. बिल्कुल. उसके बाद सर ये क्रॉस बॉर्डर वाला भी शुरू हो गया, कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. हाँ जी, बिल्कुल. एंड क्रॉस बॉर्डर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सम ऑफ अस मस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. देखिए ऐसा है, अल्टीमेटली होगा क्या, इसमें भी स्पेशलिस्ट बन जाएंगे कि आप एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज कर लो.
किसी भी चीज में। सर और अगर पास तो हो रहे, पास तो हो ही जाएंगे जी, पास होने में क्या है, देखो जब रास्ते पे चल पड़े तो, और आप हमारे पास आ गए, पास तो होना ही होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो मेरठ ले चलेंगे, मेरठ में क्या होता है वो आपस में आप बातचीत भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द किरण ग्लोबल एंड ये तो बड़ा फेमस है सर, वो जीएसटी पोर्टल ही खुलवाना था, इसके अंदर और कुछ था नहीं। और वो टैक्सेस पे करने थे करंट के, पुराने वालों का मतलब नहीं था, कुछ ना लेना ना देना था। तो ये तो अपना वही है, पोर्टल खुलवाने का था, क्योंकि हम पे नहीं कर सकते अगर पुराना जब तक पे नहीं कर दिया है, तो वो हमारे को पोर्टल अलाउ नहीं करता। तो फिर एनसीएलटी ने बोला करता है नहीं करता है, आप भाड़ में जाओ, पहले ये सिस्टम खोलो आप, सो दैट वो करंट के अपने जीएसटी पे कर पाए। राइट। नेक्स्ट सर ओम प्रकाश अग्रवाल। वो सर टीडीएस पेमेंट के ऊपर था, इसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि जो आपका टीडीएस है, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है सर। चीजें हुई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि टीडीएस, उस पर ये बोला था कि टीडीएस जो है ये बायर काटेगा इसके ऊपर, क्योंकि एज पर द प्रोविजन है। मगर उस केस में हमारे वाटर मैकेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी और लिक्विडेटर के पास पैसे कम आ रहे थे, तो उस केस के अंदर उसने बोला कि अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली डिसाइडेड इन द फेवर कि भाई साहब वो सेक्शन 238 का एडवांटेज मिलेगा। राइट। एक अपना इस वन लाइनर में रह गया, आई विल ऐड दैट 12 नंबर, नो वन हैज पॉइंटेड आउट, दिस इज द इंडस बायोटेक। इस केस में क्या था, someone mentioned in the beginning also when we discussed the arbitration, about the arbitration cases, that there is the some case law in the arbitration, right? तजिंदर जी आपने बात की थी, मोहिंदर जी ने की थी, या मोरेटोरियम के बाद आर्बिट्रेशन है उनकी प्रोसीडिंग नहीं, because in this case court said कि okay the debtor is insolvent and this is not related to the debt. हाँ हाँ तजिंदर जी, हाँ जी। So this is इसी केस से मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसी केस से कंफ्यूज हो रहा था सर कि वो उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि ये जो आर्बिट्रेशन वाले केसेस जो हैं आपके, वो अपना एडमिशन के लिए कंसिडर हो या ना हो। राइट, वो इंडस बायोटेक था, बिकॉज दे सेड कि कॉर्पोरेट डेटर इज सॉल्वेंट, तुम्हारा कोई डिस्प्यूट, तुम्हारा कोई आर्बिट्रेशन है कोई एक कलगोज के लिए, उसके लिए पूरी कंपनी को हम सीआईआरपी में नहीं डाल सकते, यू जस्ट सेटल मैटर रेफर टू द आर्बिट्रेशन कोर्ट that they have not given the in the CIRP. Om Prakash Agrawal is the TDS one. What is the Pole Infra? ये जो है ना जी इंडस वाला बायोटेक वाला राकेश जी, हाँ जी सर। इंडस बायोटेक में क्या था, इसके पास ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे। हाँ जी सर। तो अब ये रिडीम नहीं कर पा रहा था, क्लैरिफाई भी। हाँ, तो इसके पास ये थे कि मैटर शुड बी रिलेटेड टू द, हाँ, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आप जो आपके पास शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, आप 7 में आ गए, 7 में आने से पहले आप वहां पर जाओ, है नहीं? हाँ जी। तो आपके पास अगर आर्बिट्रेट, हाँ, तो वो है कि वहां जाओ पहले आप। राइट। देन ओम प्रकाश अग्रवाल इज टीडीएस रिलेटेड। पाल इंफ्रा में क्या था सर? तजिंदर जी, करुणा जी आप बता दीजिए। Sir, in PAL, I think it was whether the removal of IRP and appointing another RP is under the complete discretion of the committee of creditors. Whether a class of creditors voted for more than 50%, whether such voting shall be treated as 100% on behalf of the respective class. That was the issue in PAL infrastructure, I think so, sir. Yes, you are right. So in this case, home buyer 72.39%, and the 38% has voted in favor, directed the AR. Out of that, in more than 50% directed the AR in favor of the replacement of IRP. Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक दो और भी इश्यूज थे राकेश जी। इसमें क्या हुआ, आरपी ने बोला भाई ऐसा है, जो नया आरपी अपॉइंट कर रहे हैं तो पहले से ही फ्रॉड है, मतलब इसने जो है होम बायर्स के साथ कुछ चीटिंग की है,
तो उन्होंने कहा भाई ये सब अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस हैं, इस बेसिस पे नहीं। और उन्होंने कहा आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो इसकी आईबीसी में, अगर सीओसी आपको नहीं चाहती तो यू शुड गो। And what is Om Bosco Rail? 1 crore की लिमिट का कुछ Enhance the minimum, yeah. हाँ वो Enhance the 1 minimum crore limit. limit from 1 lakh to 1 crore for initiating CRP. And from which date it comes in? Sir, 24th March 2020 was the date where during the peak time of pandemic, I think so that was given. Right. And so the question raised by the corporate data is that whether notification under section 4 of the code raising the minimum default limit be applicable to applications pending or admissions, sir. That was the thing, sir. Right, very right, very right. बेसिकली ये था कि प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है, Yes. तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोस्पेक्टिव है। तो ये भी आ जाता है अपने एमसीक्यू के अंदर, ये किस डेट से एप्लीकेबल हुआ था कभी कभी। एंड व्हाट इज केमिकल एडिटिव्स? दो केसेस में आर्बिट्रेशन के एनसीएलटी में, एम्प्लॉय सैलरी वाला भी उन्होंने आर्बिट्रेशन में। हाँ, उन्होंने कहा भाई आपका तो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट की वजह से आप आर्बिट्रेशन में जाओ, पहले सीधे आप यहीं आ गए, अगर वहां आपको नहीं मिलता फिर आ जाना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आपको एंटरटेन कर लेंगे, पर पहले आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखो। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है एंड इट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है। So it was whether और बेसिकली ये है कि भाई ये जो आईबीसी कोड है, इट इज नॉट टू सेटल डिस्प्यूट और रिकवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, दिस वाज आल्सो सेड कि भाई ये रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, ये तो रेजोल्यूशन के लिए है। रेजोल्यूशन इट इज ए बेनिफिशियल लेजिस्लेशन फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर द पर्सन्स हु वांट टू रिकवर द मनी। बेसिकली ये तो कंपनीज के लिए बेनिफिशियल लेजिस्लेशन लाया गया, आईबीसी जो लाया गया। तो 238 ओवरराइड सर? नो दिस इज 238 की बात नहीं है, वो कह रहा है कि ये रिकवरी नहीं है भाई, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली, वो यहाँ पर आ गया, उन्होंने कहा आप अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट दिखाओ, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन में गए आप? नहीं गए, पहले आर्बिट्रेशन वाले एग्जॉस्ट करो, ठीक है, आर्बिट्रेशन में अगर नहीं मिलेगा फिर तो आप यहाँ आ सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट ए रिकवरी मैकेनिज्म। आपको पैसे नहीं मिले ये थोड़ी आईबीसी में चले जाओ। In 238A, basically they are discussing on the overriding effect of IBC, but in this case they are deciding ki sorry, I skipped on the line. Yeah. Sir, So it is not a recovery mechanism. IBC code is not a recovery mechanism. So for the recovery purpose only you are filing a CIRP. This should not be the case. मगर केवल सर फाइनेंशियल क्राइटेरिया के लिए तो रिकवरी मैकेनिज्म ही है सर, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो अपने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया इसको। They are taking the haircuts also, financial creditors of the line, तो क्या क्या हो रहा है, there's a separate issue, let us not discuss here. हाँ, बड़ी लंबी कहानी है सर वो। Right. So let us quickly finish the other ones also, this NCLAT and High Court. So my purpose is that if you are all interested, then we can continue this and then we can quickly sum up these things. Otherwise, we can speak another for 2 hours and we will not get anything. Only point is that either you will keep the mobile phone on, and that's true, sir. Because if you are making this section interactive, like Mr. Tajendra is doing, Karuna is taking, I request Mohindra and other members also to come forward. At least either they can read the book, and then only this live session can be helpful if everyone is coming up. Because we have already cleared the exams and we know the sections, we know the case laws also, and we can repeatedly say these things. But if you come up about your understanding about the case laws, then either Mr. Gupta can correct it or I can add something in that. Sir, and that is a way to learn also. सर इस कैमिजोल में ये भी था ना कि सिर्फ 4 लाख रुपए ही थे, जिसके कारण ये इन्होंने मिस्टर हरीश जो एम्प्लॉय थे जिन्होंने फाइल किया था सीआरपी, एंड सर उसमें ये भी यही पॉइंट था कि उन्होंने कहा था डिसीजन में कि द डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड एमिकेबल फेलिंग व्हिच द पिटिशनर इज एट लिबर्टी टू इन्वोक द आर्बिट्रेशन क्लॉज। सर दैट वाज, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है, ऐसे भी कहा गया था। ये तो ऐसा है ना, मेरे हिसाब से वही केस था जिसमें कुछ वर्क फ्रॉम होम भी किया था इस बंदे ने,
तो उस चक्कर में वो फिर पैसे वैसे नहीं दिए उसके कुछ। Yes, sir. Yes, sir. Now synergy डोरे सर असाइनमेंट ऑफ लोन था ये, किसको? ये बेसिकली क्या एमएफएल कंपनी MFL था। राइट एमएफएल को असाइनमेंट ऑफ लोन किया गया था, साइन कर दिया था, पहले ही साइन कर दिया था आईबीसी लगने से पहले, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी उसके अंदर, बट एनसीएलटी ने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसने एलिगेशन लगाया कि ये अल्टीरियर मोटिव से किया गया है, ताकि मेरा जो है मेरा वोट शेयर कम हो जाए, और इन्होंने ये असाइनमेंट अल्टीरियर मोटिव से किया है। सर तो उन्होंने नहीं वो ठीक है, उन्होंने कहा भाई दे आर एंटाइटल्ड टू डू इट, असाइनमेंट इज नॉट बैड। एंटाइटल्ड, वो बिफोर था, हाँ बिफोर था, स्टैम्प पेपर पड़ा होगा सर पुराना। अनुज वाजपेयी, राकेश जी को स्माइल आ गई इस बात के ऊपर। अनुज वाजपेयी, वो अपना अनुज वाजपेयी तो 29A है सर। हाँ 29A में एसेट्स बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते किसी हाल में नहीं तो ये आईबीसी फेल हो जाएगा। Right. So in this case, they have decided that liquidator is not 29 restriction is applied in the liquidation sale of asset also. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तजिंदर जी। आज गुरदीप जी चुप है, गुरदीप जी कुछ नहीं बोल रहे। आपने तो पढ़ा हुआ है गुरदीप जी। गुरदीप जी आप हैं? हाँ जी मैं हूँ, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है असल में। ओके ओके, एटलीस्ट जितना आपने आज और कल में समझा उतना एटलीस्ट वी कैन इंटरेक्ट। और कल जो था वो 1-to-1 चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। ओके ओके ओके। नहीं कोई ऐसा केस लॉ है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है, केस लॉ है, ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, इतने अच्छे से कि मतलब जैसे स्पून फीडिंग नहीं होती, आई एम फीलिंग लाइक दैट। तो मींस आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड आल्सो, बट कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है लेकिन मैं ठीक से भी कर नहीं रही हूँ। नहीं हम लोग तो क्या होता है, जैसे अब मैंने कुछ रिकॉर्डिंग डाली थी केस लॉज वाली, हम तो क्या करते हैं कई बार क्वेरी सेशन भी कर लेते हैं, और क्वेरी में कई लोग मुझे कहते हैं भाई हमें ये केस लॉ बता दो 2-4, तो मैं क्या करता हूँ कई बार दिन में भी कर लेते हैं हम लोग क्वेरी सेशन कि भाई ठीक है, अब जब एक कोई बताना है तो भाई 4 और आ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अपने कई लोग क्या होता है उसमें अपने आप पूछ लेते हैं भाई इसमें ये समझा दो, इसमें ये समझा दो, इस तरह से। उसकी एक रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल रखी है उसमें, जो आज केस लॉज की रिकॉर्डिंग डाली है ना, तो उसमें 1-2 रिकॉर्डिंग ऐसी है जिसमें क्वेरी सेशन ही लिया गया है। ओके भाई कहीं से भी पूछो, कोई भी केस लो। राइट सर। So purpose क्या है, the section will be more interactive, more easy to learn or more easy to understand. Yeah. So SKS power में they have said कि okay PFU to be decided first. पहले डिसाइड उसको रिमांड बैक कर दिया केस को एनसीएलटी केस में। एस्टोन फिट सोलर के केस में राइट ऑफ, और इसमें एसकेएस पावर में एक और बात थी राकेश जी, इसमें क्या हुआ था, इसने कहा था भाई आप इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते, इन्होंने कह दिया कि भाई पैसे वापस कर दो, और पीयूएफई को डिसाइड नहीं किया, मतलब ये वैसे ये ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल है या नहीं है, वो विदाउट डिसाइडिंग द प्रेफरेंस और अदरवाइज ऑफ द ट्रांजैक्शन उन्होंने क्या किया, इंटरिम ऑर्डर दे दिया। तो एनसीएलटी ने कहा भाई आप इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उस चीज को फाइनल करो। आपने ये तो कह दिया पैसे रिवर्स कर दो, लेकिन ये बताया नहीं कि ट्रांजैक्शन है क्या। बिल्कुल। तो एस्टोन फिट सोलर के केस में सेक्शन 10 के अंदर राइट ऑफ शेयर होल्डर्स जो वोटिंग राइट था उसको डिस्कस किया गया कि इफ डेट ऑफ प्लेज मेंशन्ड कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट देयर शेयर होल्डिंग राइट विल बी, शेयर्स विल बी रिलिंक्विश्ड। तो उन्होंने कहा नहीं, आप फिर भी सेक्शन 10 में वोटिंग राइट रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। मोजर बियर कर्मचारी यूनियन के अंदर डिसाइड किया गया कि पीएफ फंड इज नॉट एन एसेट। गैमन इंडिया के अंदर कहा गया कि जो पार्टनरशिप का फर्म का पार्टनर है उसके केस में सीआईआरपी आप नहीं ला सकते, वेदर इट इज ए कॉर्पोरेट पर्सन और नॉट। दिस इज रिलेटेड टू सीआईआरपी। इन एससी सेकंड अमित वाजपेयी में रोल ऑफ लिक्विडेटर हैज बीन डिसाइडेड कि लिक्विडेटर के क्या क्या रोल्स है। दे हैव डिसाइडेड दोस थिंग्स। इरा इंफ्रा के अंदर सेक्शन 8 नोटिस, दैट इज 8 वर्ड्स इन इरा इंफ्रा,
that can be mentioned. Section 271 का notice is not sufficient. You have to give the demand notice under section 8. Ferrology case में उन्होंने बोला कि CIRP first you have to initiate against corporate debtor, then only you can go after the corporate guarantor. Anything till here? In Vishnu Piramal, they have mentioned the CRP is against the corporate guarantor only if principal borrower is not a corporate person. Then you can initiate. So if you go by the Vishnu and Piramal enterprises and the Gammon India, there are the two things. That when is corporate guarantor is the corporate person, but principal borrower is not the corporate person. And in Gammon India, the corporate person is the partner of partnership firm. Means there is no relationship of guarantee. So this is the difference in the initiation. Exim and CHL invocation, इसमें corporate guarantee को invoke किया था. अशोक बी ज्वारका के अंदर CIRP against the subsidiary company can be done even if matter of CIRP for holding company is pending. तो both are the separate thing. वर्साना इस्पात in case this PMLA का केस है. PMLA के 3 केस है, SRE वाला है, वर्साना इस्पात और JSW स्टील. JSW स्टील में बोला कि जो अटैचमेंट जो की है, कोई अटैचमेंट CIRP के बाद कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती. एक बार CIRP इनिशिएट हो गई, अटैचमेंट ऑर्डर सेट असाइड कर दिया. वर्साना इस्पात में अगेन IBC सेक्शन 238A IBC ओवरराइडिंग इफेक्ट इज देयर. उमंग रियल टेक भाई वर्साना में ये भी कहा गया, वर्साना में राकेश जी ये भी कहा गया भाई, कहने लगे भाई देखो ऐसा है, तुम अटैच करके भी क्या करोगे, अटैच करके भी तो इनको ही दोगे, क्रेडिटर्स को ही तो देना है ना अल्टीमेटली. तो IBC क्विकर लेजिस्लेशन है, तो IBC में चलने दो. आपने अल्टीमेटली तो अटैच करके भी क्या करोगे, अटैच करके पैसे तो जिनके ड्यू है उनको ही दोगे ना आप. राइट. Then Umang Realtek CRP project wise and reverse CIRP concept is introduced in Umang Realtek. So home buyer case. LHG versus SBI liquidation order set aside. नो केस हाई कोर्ट के हैं. सी मेटालिक्स के अंदर सेक्शन 75 अल्ट्रा वायरस डिस्कस हुआ. कुशमैन एंड वेकफील्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर. कुशमैन एंड वेकफील्ड इज वेरी नॉन ब्रोकरेज फर्म इन द रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट के अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूएशन करनी पड़ती रहती है. तो उसके लिए उसने अप्लाई किया कि, लेकिन उस पर डिसीजन आया कि यू कैन नॉट अपॉइंट एनी एसोसिएट जॉइंट वेंचर कंपनी एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर. अल्ट्राटेक नाथद्वारा एंड दिस लियो एडिबल्स, 2 cases are there for the government dues. Univalue projects is the relation to information utility. Can record with the information utility is not required to prove the dispute, to prove the debt. Tata Steel BSL summon against the company cannot be issued, but summon against promoter can be there. In Jotun India, they have held that company court over the CIRP proceeding. Case was discussed. And ED versus Axis Bank OD car, where the money has been seized by PMLA. So this is again money laundering case, the 4th one for the PMLA. These are the 9 cases of the High Court. Innovative Industries, NEFC can file CIRP. Suspended board, whether has the power to appeal or not. The directors of suspended board of this held no. And then irrespective of dispute, section 7 application can be filed. Means whether there is a dispute or not, you can file that. Only in case of section 9 dispute to be there. Mobilox innovation में section 8 में उन्होंने जो 8(2) के अंदर dispute का point था कि dispute should be pre-existed. This we have done today also. This should, it doesn't mean that after issuing the demand notice someone is raising a dispute and say that the claim is disputed. It should not be held. So this was there. And one more thing was discussed in this imported judgment, that word and, that is dispute and a suit is pending or arbitration is pending is there. So this is the Mobilex innovation case. And from here we discuss about the Indo-Biotech case also. Dharni Sugar, wherever RBI circular comes in, the Dharni Sugar case will be there in the Supreme Court. That RBI circular on stressed assets, so that is the yes, stressed asset, right. Okay, sir. And it was cases, section 35AA and 35AA, right. That circular was requested by RBI also, no? That 18th February. That was withdrawn.
That was withdrawn by way of a press release, and they said we will issue another circular. Yes, sir. Yes, sir. In ArcelorMittal, basically, along with others, 29A issues are discussed. In SR Steel, role of NCLT, NCLAT, COC, resolution professional, resolution applicant has been decided. And they also mentioned that profit during the CIRP is not to be used for payment to the creditors. Shivam Waters has given the restriction to the SC that you did not to examine the validity of IBC. BK Educational, that 238A is applicable retrospectively and also a case of Limitation Act. So there are 3 cases of the Limitation Act: BK Educational, Sagar Sharma, and Babulal Gurjar, or all of the Supreme Court case. In case Shashidhar, role of adjudicating authority NC is defined in case Shashidhar also. So in addition to the COC of SR Steel, in case Shashidhar also, they have discussed about the role of AA. In Swiss Ribbon, applicability of law is discussed. In Anuj Jain, they have mentioned that financial creditor of holding, this is GIL case, cannot be the FC of subsidiary. Then Chitra Sharma, Article 142 invoked the home buyer case. Unified Telecom is the spectrum related case. K. Kishan Vijay Nirman is the arbitration related case. And Meternary, the SBI, is the IP ex-employee, whether IP can be the ex-employee or not. Though the IP was replaced, but they said this is not a precedent. IP can be the ex-employee of the financial creditor in other cases. And again, as I said earlier also, that we can discuss this at length, or you can read it. And if any queries are there, I'm always available. Any other questions, or we can rest for the day? So thank you, Rakesh ji. I think there are no more questions, and we have had a very interactive session yesterday and today. We have already posted in the group our earlier recordings also. These PPTs are also posted in the group, which are very useful for memorizing case laws on the last day. So thank you very much. And day after tomorrow, we will be having a class with CA Divya Somani ji, who will be taking on case studies on partnership and LLPs. And in the meantime, you can always write in the group, and you can call us also. There is no issue. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई लिखने में दिक्कत आती है, तो भाई आप पूछ सकते हो.